आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस तमाम चीजों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। Okay, let's go over to our colleague Pallavi to provide us with all of the key outtakes here. Pallavi, it's very interesting. Just about an hour ago, you highlighted for us different opposition opinions that had started coming in. So right from at that point, the Shiv Sena, Uddhav Thackeray leader Priyanka Chaturvedi, to other statements we saw coming in from the Congress, to now the AIMIM, all taking the aim at the Gujarat government, because we've seen the Supreme Court come down very sternly on it. They've said that it's an example of abuse of power by the state of Gujarat. They've also said the state of Gujarat acted in complicity with the convicts. So can we only expect the pitch of this to rise over the next few hours? Well, yeah, I think so. And when I remember the remission happened of the 11 convicts in the Bilkis Bano case, at that point of time also all opposition parties, especially the stakeholders like AIMIM and the Congress party, had made the point that this is a state-sponsored cover-up operation. The reason is that the 11 convicts were considered to be important vote bank and nobody's in their respective constituencies, and they have been strategically released at a time when elections are taking place, so as to ensure that they either campaign or they influence the pattern. And even when, and there was much outrage, and not only the women activist groups, but politicians also came out and spoke very, very strongly against it. Bilkis Bano's family also, as we can understand,
also reacted very emotionally. And when the matter went to Supreme Court, the matter also became mired in a lot of politics. Well, today, but naturally, I can understand why the same political parties would want to make the point while accepting and congratulating the Supreme Court for its verdict. Also making the point that the BJP should always apologize. They talk about women empowerment, but for the sake of few votes, they had ensured, their government had ensured the remission of those 11 convicts. And this is something that the BJP will be constantly reminded by the Congress party and others as well. Okay. Pallavi, if I could just ask you a further question here to understand more about the way in which this is playing out. Are we likely to see, because the INDIA has had opposing voices on many key issues, is this an issue where we could see the INDIA be united finally? Yeah, I mean, we are going to see, at least on this point, most of the opposition parties in India can remain united, because it was not a one-off thing. It was something which, according to the opposition parties, was very well planned and well timed, and the timing was, of course, close to elections. And the 11 convicts who ideally should have been kept away and behind bars were released, and they were also extensively used during the campaign. So the point which the opposition parties have been making is that what kind of a security are you providing, one, to the family, and generally to those who have been a victim of crimes by men against women. I mean, what faith can they have if the state government ruled by one particular party itself seems to be defending them? And the logic which was given by the Gujarat government was something which was completely rejected by them. Okay, thank you, Pallavi, for highlighting this for us. Okay, let's now take you to more reactions on this entire story. Take a look. This is a welcome judgment. More so when last year we saw horrifying sights of people belonging to a particular party welcoming these criminals, garlanding them, honoring them in social functions. This came as a shock. But today the Honorable Supreme Court has restored the faith of every single Indian that in today's India, the caste or the religion of the criminal or the victim of a crime will not decide whether that person will get justice or not. We welcome this judgment. It restores our confidence. Both the Honorable Judges, Justice Nagaratna and Justice Bhuiya, they have very categorically stated what is the legal analysis and reason for setting aside, quashing the remission orders and directing the convicts to return to prison within a fortnight. The court has said, and it's a scathing indictment of the state of Gujarat. The court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced. We welcome the Supreme Court order. It's a very important order because at least it does hold some hope for justice. And importantly, the comments of the Supreme Court also point to the culpability of the central government and the Gujarat government, led by the Bharatiya Janata Party in both cases. And we hope that the hearings which are going to continue will ultimately end in justice for Bilkis Bano and for all women of this country. बिल्किस बानो पे आज कोर्ट ने कहा है कि वापस जितने भी कन्विक्ट थे उनको वापस जेल जाना चाहिए और गुजरात कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती है, रिमिशन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। नारी शक्ति का इतना क्रूर अपमान कभी नहीं हुआ जितना बिल्किस बानो मामले में हुआ। किस तरह से एक प्रेग्नेंट औरत को किस तरह से सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया और उसके जो अभियुक्त थे कैसे उनको क्षमादान किया गया। ये नारी जो शक्ति है, जो नारी हमारी प्रेरणा की स्रोत है, ये उसका सबसे बड़ा अपमान है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ।